Welcome everyone to my YouTube channel Learning with Roshan Sir. We provides video on physics, chemistry, maths and Vedic maths. हमारे चैनल के सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. Now let's start with the video. Now here we start with the exercise 1.3 of the chapter number systems. Now here we have to start with the question number 1 first part, and we'll be finding the decimal form of these all and specify which kind of decimal expression it is. So 36 by 100 can be written as 0.36, and as it ends over here, that is 0.36, therefore it is terminating decimal expansion. Now let's see the second part, and here we are having 1 upon 11. So first of all we are going to divide 1 by 11 like this. Now we have placed a decimal point, so we have increased 1 0, and to get one more 0 we have placed a 0 over here. Now we are going to divide it, and here we get 1 as the remainder. Therefore this 0 and 9 will be repeating again and again, and here we get 0.09 with a bar. So this is non-terminating decimal expansion. Now I'll move for the third part, and here we have 4 whole 1 by 8. First of all we are going to change this one into a improper form, then we are going to divide it like this. Now it can be divided by 4 times, that is 32, and we are going to continue with it by writing 1, and after this we'll take a decimal and put a 0 over here, and 8 ones are, so we get 8. Then on subtracting we have got 2, then with the help of this decimal we can increase 1 0, and 8 twos are, we get 16, and here we get 4 as the remainder. Now again 1 0 will be increased due to a decimal point, and by the 5 times we get 40, and as we get the remainder 0, therefore this is a terminating decimal expansion. And here we go with the fourth part, that is 3 by 13, and we are going to divide 3 by 13. अब यहाँ पर जो 3 है वो 13 से छोटा है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे. Now 13 2 is 26, therefore and we get the remainder as 4. Now एक 0 तो अपने आप बढ़ जाएगा. Then 13 3 is 39, and we get the remainder as 1. 1 0 will be increased due to the decimal point. Then उसके बाद भी ये हमारे पास ये भी छोटा ही है, तो हम एक 0 यहाँ पे बढ़ाकर एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे. 13 7 is 91, फिर हमारे पास रिमाइंडर आता है 9, और फिर हम एक 0 इसमें बढ़ा लेंगे बिकॉज ऑफ द डेसिमल साइन. 13 6 is 78, और फिर यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आएगा 12, और एक 0 डेसिमल की वजह से बढ़ेगा. देन 13 9 is 170, एंड हियर वी गेट 3 एज द रिमाइंडर. अब ये 3 वही रिमाइंडर है जो हमें स्टार्टिंग में मिला था, ये फिर से रिपीट हो जाएगा यहाँ से सारे स्टेप, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.230769, और इसके ऊपर बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा. यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है 3, वो वही था जो कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमको 3 दिया गया था. नाउ एज यहाँ पे बार बार रिपीटिशन हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पार्ट. हियर इन दिस वन वी आर हैविंग 2 upon 11, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड 2 by 11. जैसे कि 2 11 से छोटा है, तो पहले हम यहाँ पे डेसिमल का यूज़ करेंगे. इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे ये हो गया 20. Now 11 1 जा. Now on taking 11 1 जा, we got 11 and 9 is left as remainder. Now इस डेसिमल की वजह से एक हमारे पास 0 बढ़ जाएगा, और फिर 11 8 जा 88, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग से था. सो यहाँ पे ये दो डिजिट्स बार बार रिपीट होने लगेंगे ना. ये हो गया हमारे पास non-terminating decimal expansion. Now I'll move for the sixth part, and here it is 329 divided by 400, and here we see that 329 is smaller than 400. Therefore हमने यहाँ पे एक डेसिमल यूज़ किया और यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, and we get 90 as remainder. Again एक 0 तो यहाँ पे बढ़ ही जाएगा. Then 400 2s are 800, and remainder we get 100. Again 1 0 will be increased, then 400 2s are, and on subtracting we have got 200. Again डेसिमल की वजह से एक 0 और बढ़ेगा, and we get 2000. Now 400 5s are
2000। ना यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एंड नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Now in question number 2, we have been given the value of 1 upon 7, that is equals to 0.142857, and we have to find value of 2 upon 7. Now 2 upon 7 can be written as 2 into 1 upon 7, and on replacing 1 by 7 by this value we get this one. Now we are going to multiply these two and we get 0.285714, and similarly 3 upon 7 can be calculated by 3 into 1 by 7, that is equals to 3 into 0.142857, and this will be equals to this one as the answer. Now 4 upon 7 will also be calculated like this, और हमारे पास वैल्यू आया 0.571428. then 5 upon 7 equals to this one, and 6 upon 7 will be 0.857142. ना यहाँ पर एक चीज़ हम और नोटिस कर सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे जो डिजिट्स हैं हमारे पास 142857, ये रिपीट होके वही सारे डिजिट्स हैं। यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुआ है तो 2857 फिर 14, 2857 देन 14। इसके केस में 4 से स्टार्ट हुआ है तो ये हो गया 42857 देन 1। हियर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 देन 5 7 1 4 2 and 8. Here it is starting from 7, so we have written first this, then 7 1 4 2 8 5, then here it is 8, so 8 5 7 then 1 4 2. Now we'll move to question number 3. Now इस क्वेश्चन में हमें 0.6 के ऊपर एक बार लगा के दिया है और हमें इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0.6 बार ले रहे हैं, दैट कैन बी रिटन एज 0.666 एंड सो ऑन. नाउ अब यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 वाले नंबर दैट इज़ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 6 पॉइंट, ये डेसिमल एक बार इधर शिफ्ट हो गया 6.666. ना इसको हमने बना ली इक्वेशन नंबर 2 और इसको रखा हमने इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, and here we arrange this one. Now 10x minus x, that will be 9x. then here डेसिमल के बाद के सब तो सेम ही है तो ये 0 हो जाएगा, यानी 6 minus 0 will be 6. then here we are having x equals to 6 by 9 और सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2 by 3, that is equals to 2 by 3 as your answer. Now let's see the second part of this one, and here we have 0.47 to the bar. इसमें भी सबसे पहले हम इसे x सपोज करेंगे, so let x equals to 0.47 to the bar, which can be written as 0.477 and so on. ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन भी हो जाएगा, और यहाँ पर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग फिर से 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी गेट 10x इक्वल्स टू 4.77 एंड सो ऑन. फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट करेंगे, उसको पहले ऐसे अरेंज कर लेंगे. देन 10x माइनस x विल बी 9x, एंड हियर इट विल बी 4.7 माइनस 0.4, दैट इज 4.3. Then we are going to make a transpose of this, and this will become x equals to 4.3 upon 9, and this will be equals to 43 by 90. And now we'll move for the third part. In third part we are having 0.001. Very first of all हम इसे भी x लेंगे और हम इसे एक्सपैंड करके 001, 001 एंड 001 करके रिपीट करके लिख सकते हैं. ना यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स पर बार लगा, दिस मीन्स हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, एंड वी गेट दिस वन एज 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल 3 बार शिफ्ट होगा, 1 2 एंड 3. सो हियर वी गॉट 1 पॉइंट दिस वन. नाउ सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. नाउ इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर लेंगे,
अब डेसिमल के नीचे डेसिमल में आने के बाद इस डेसिमल के बाद के सारे नंबर सेम है, सो ये सब जीरो हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस जीरो, दैट इज इक्वल्स टू 1, और 1000 माइनस एक्स, 1000 एक्स माइनस एक्स विल बी 999 एक्स, and x will be equals to 1 upon 999. That's the answer for this question. Now let's see question number 4. Here in question number 4 we have to express 0.9999 in the form of p by q, where, so again we have taken x equals to this one, and as one digit is repeated, so हम इसको 10 से multiply करेंगे, and here we get the second equation. Now again we are going to subtract the first equation from second, and here we get this. Now 10 में से x को subtract करने पे हमारे पास आएगा 9x, और 9 पॉइंट दिस, तो डेसिमल के बाद के सब सेम है, तो ये जीरो हो जाएगा। 9 माइनस जीरो विल बी 9, दैट इज x इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, एंड दिस विल बी कैंसिल आउट टू गिव यू 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। सो यहाँ पर सरप्राइज की बात इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, नॉट इन अ फ्रैक्शन, और ये 0.9999 है। तो इसका रीज़न है कि ये यहाँ पर बिल्कुल ही इक्वल है, बिल्कुल ही पास में आता है 1 के, दैट्स वाई इट इज़ नॉट टू बी सरप्राइज्ड। Question number 6. Here in this question, it has been given that look at the several examples of the rational number in the form of p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having a terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? So to get terminating decimal expansions, q must be of form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are positive integers. Now in question number 7, write 3 numbers whose decimal expansions are not terminating and non-repeating. So you can give any 3 examples, and here we get some examples which are non-terminating and non-recurring in nature. Now let's see question number 8. Now we'll move for the question number 8. Here we have to find 3 different irrational numbers between the rational number 5 by 7 and 9 by 11. We have got the value of 5 by 7 as 0.71 and 9 by 11 as 0.82, and we will be finding 3 different irrational numbers between these two, and here we have got 3 different irrational numbers between these two. Here 0.71 और 0.82 के बीच में हमने 3 एक irrational numbers बनाए। इस 3 irrational numbers बनाने के लिए 2 चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए लास्ट में 3 डॉट, और नॉन रिपीटिंग के लिए यहाँ देखना होगा कि कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में रिपीट ना कर रहा हो। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. नाउ हियर इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू आइडेंटिफाई whether the numbers are rational or irrational number. So here first of all we are having the root 23. The root of 23 is an irrational number because 23 is not a perfect square. Then we have root 2 to 5. Now this can be written as 1 and 5 because 2 to 5 is a square of 1 5. So it is a rational number. Then here 0.3796, ये एक terminating decimal expansion है. So again it is a rational number. Now over here it is 7.478478. So इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 to the bar. This means ये repeative है. This means it is again a rational number. At last here we are having 0 1 0 1 0 0 1 triple 0 1 4 times 0. So it is not repeating and it is non-terminating also. Therefore it is a rational number. That's all in this video. Thank you. हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन इट.